India is known as the diabetes capital of the world. It happens to contribute to 17% of the total diabetes cases in the world. According to a recent ICMR study, it was found that 11% of India's population, which is about 100 million people, are diabetic. Not only that, about 15% of the population, which translates to roughly 136 million people in the country, are pre-diabetic. Keeping all of this in mind, I am Rupsha Bhadra and we are here at cannoughtplace in Delhi today to understand whether the people of India, especially Delhi, are cognizant of how serious this issue is and whether they test regularly for blood sugar level. Let's find out. Can I ask you a question quickly? No, quick second please. No. एक सेकंड बात कर सकते हो आपसे? आपको डायबिटीज क्या होती है पता है? उसमें शुगर होता है, उसमें जो जख्म हो जाते हैं वो ठीक नहीं होते जल्दी से। ज़्यादा खा लिया ओवर हो जाए ईटिंग तो उसमें हो जाती है डायबिटीज़। उससे क्या नाम है, उसमें खून वगैरह नहीं दे सकते किसी को। अगर हम टैटू बनाएंगे तो खून ज़्यादा निकलता है उससे। टैटू नहीं बना सकते ये पता है? हाँ। जो मीठा ज़्यादा खाते हैं इनको तो है, मेरे को तो है। Yeah, I do have diabetes. So basically it's a body sugar level that increases and body basically stops producing insulin in your body. Diabetes is a chronic disease that occurs either when the pancreas does not produce enough insulin or when the body cannot effectively use that insulin that it produces. Insulin is a hormone that regulates blood sugar. क्यों होता है उनको? मीठा ज़्यादा खाते हैं और क्या कहते हैं आपका मतलब हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं होते। अब ये तो यूँ कहते हैं ज़्यादा मीठा खाने से होता है। और जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, उन लोगों का भी ब्लड हाई हो जाता है, शुगर। लाइफस्टाइल से भी होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपने कोई टैबलेट गलत कोई रिएक्शन होगी तो वो भी इंसुलिन को इफेक्ट कर देता है। एक्चुअली इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है अपने बॉडी में, इस वजह से भी होता है। मीठा शुगर टाइप जो खाना होता है ना, उसकी वजह से जो आजकल क्या है रहन सहन थोड़ा वो है, तो खाना वाना जो टाइम पे नहीं खाते, सही से भी नहीं खा पाते, ना एक्सरसाइज करते हैं लोग। इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होना बंद हो गया तो शुगर का कंजम्पशन बॉडी में नहीं होता, शुगर लेवल बढ़ जाता है, जो हमारी लैंग्वेज में डायबिटीज़ नहीं शुगर कहते हैं। Type 1 diabetes occurs when your immune system, the body's system for fighting infection, attacks and destroys the insulin-producing beta cells of the pancreas. Type 2 diabetes, the most common form of diabetes, is caused by several factors, including lifestyle and genes. फैमिली में है हिस्ट्री कुछ? नहीं, मेरे मम्मी पापा को भी डायबिटीज़ है। माय ग्रैंड मॉम शी हैड डायबिटीज़ बट नहीं, मुझे तो नहीं हुआ। My nanny used to have it and she died because of diabetes. Like I lost my grandmother because of it. My mother has borderline diabetes and from her side like there's a strong family history. If you have a family health history of diabetes, you are more likely to have pre-diabetes and then develop diabetes. You're also more likely to get type 2 diabetes if you have gestational diabetes, are overweight or obese. किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए ताकि डायबिटीज़ ना हो किसी को? सबसे ज़्यादा तो देखिए कोल्ड ड्रिंक्स जो हम लोग आजकल पी रहे हैं, कि वो स्वीट पोटैटोज होती हैं जिन्हें शकरकंदी बोलते हैं। अरे ये तो बहुत सारे व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक सब बता देते हैं। आई थिंक राइस, जामुन खाओ, एक्सरसाइज करो, और डॉक्टर्स तो इंसुलिन के इंजेक्शंस दे देते हैं। Fried foods and other foods high in saturated fat and trans fat, foods high in salt, sweets such as baked goods, candy and ice cream, beverages with added sugars such as juice, regular soda and regular sports or energy drinks. आपने कभी ब्लड शुगर लेवल टेस्ट किया अपना? कभी नॉर्मल ही आया मेरा हमारा। और कितना ऑफन करवाते हैं? मैं ऑफन नहीं करवाती हूँ बट फिर भी एज इफ कोई सर्वे वगैरह रहा तो फिर आई कैन डू दैट। हफ्ते में 3 दिन में ऐसे तीसरा चौथा दिन में करती हूँ। Then I go for the health checkup like in 6 months maybe. I guess twice a week. When I fall ill and when the doctor recommend. Once a month. जी हाँ, ऑलवेज टेस्ट करवाते हैं ईयरली, लेकिन दोनों आदमी को नहीं है सो। Talk to your doctor about blood test options to diagnose pre-diabetes. If test results are normal, testing should be repeated at least every 3 years. In those without these risk factors, testing should begin at age 35. किसको हो सकता है ये डायबिटीज? ये बेसिकली अगर ज़्यादा बोल तो मीठा खाने से होता है, जैसे कि So the one who has a strong family history for diabetes is more prone to have diabetes. Any people can. It's usually genetic from what I've heard, what we've learned in school. ये तो देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये जो फैमिली बैकग्राउंड है उसी के आधार पे होता है,
और जनरली जो आदमी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनको होता है। Type 1. Family history. Having a parent, brother or sister with type 1 diabetes. Age. You can get type 1 diabetes at any age, but it usually develops in children, teens or young adults. Type 2. Have prediabetes, are overweight, are 45 years or older, have a parent, brother or sister with type 2 diabetes, are physically active less than 3 times a week if you have non-alcoholic fatty liver disease. And what lifestyle do you follow so that you can? I have to do a lot of physical activity. Eat healthy, avoid junk foods, and do sleep well. Back in the days when I had my grandmother, she would ensure we sleep in time, we wake up in time, and we eat ghar ka khana, which is something which has gone away. Considering we are in a place surrounded with good food, tastier food, but very unhealthy junk food. I myself love the street food and stuff. बहुत सारे एहतियात बरतें हैं तो diabetes manageable है. I can't say it's curable. Make and eat healthy food. Be active most days. Test your blood sugar often. Take medicines as prescribed even if you feel good. Learn ways to manage stress. Cope with the emotional side of diabetes. Go to checkups. Some people did get it right. Long periods of sitting or laying down leads to something called a sedentary lifestyle, which is one of the prime contributors to diabetes in India today. Apart from this, genetics, family history, stage of life like pregnancy or something can also be a reason that people have diabetes. For more such videos, don't forget to like, share and comment on this video and subscribe to Only My Health.